चलो, so last class में we studied about the battery charging में, discharging में, power how much it is giving, power how much it is giving, P equal to VI is the formula we derived the expression, right? Last class में power is voltage into current कभी भी, okay? Even charging में same formula है and discharging also same formula. And this battery, this cell से whatever the current is flowing in the resistor, okay, and what are the voltage which is across the resistor, the power dissipated formula is also VI, right? Power dissipated in resistor. And by using Ohm's law, we got the formula I square R or V square by R is a formula. Okay, very important thing we'll learn. Okay, now power we finished. Now we'll go for electrical energy, then numericals करने वाला है. Okay, चलो, electrical energy dissipated in resistor, energy dissipated in resistor. So we should use P is energy is equal to power by time, power into time बोलते हैं ना, power into time बोलते हैं. So वो formula we should not use in this में. क्या formula use करेंगे? P is equal to dE by dt. Okay, power is energy, small change in energy by small change in time, and dE is equal to P dt. I'm integrating both sides to get energy is equal to integral P dt. ये formula use करने वाला है. P into T we should not use. Only some constant में only we should use. Power is constant, but here varying में तो we have to use E is equal to integral P dt. We have to use the formula. Okay. Now we learned अगर some suppose constant है, we are using this one. E is equal to integral P dt. Okay. Power के जगह में I am using I square R dt. Suppose मान लो if I is constant, so क्या फॉर्मूला आएगा एनर्जी का फॉर्मूला? I will be coming outside, R is coming outside, integral dt is T, I square R T. देखो, this is only heating effect. This is called Joule's law of heating. Okay, so this is nothing but heating effect. Energy dissipated in resistor is I square RT. And this formula when we have to use only when I is constant. Then only बाहर आ जाएगा. Otherwise you have to go for this formula only. P के जगह में वो लगा के integrate करना पड़ेगा. Okay. Now same thing. Integral P dt in different forms we will see. Okay, integral. Now I am using the formula V square by R dt. In this में suppose voltage is constant. So बाहर आ जाएगा V square by R into T. Okay, this is only Joule's law of heating, right? Joule's law of heating. Joule's law of heating 10th class में भी study किया. Whenever current is passing through resistor, it is getting heated up. Some energy is getting dissipated. कितना energy dissipated? I square RT. That is only heating effect. Okay. And तीसरा formula P dt. P के जगह में VI dt. In this में suppose if V and I is constant, so क्या आएगा? VIT. So energy का formula, if they don't mention normal current is flowing, means you have to use these formulas only. If the current is variable, that time you have to use this one. Energy is integral P dt. इंटीग्रल पी डी टी यूज करके अगर कुछ करंट टर्म्स में दिया तो यूज आई स्क्वायर आर डी टी, अगर वोल्टेज टर्म्स में दिया तो यूज वी स्क्वायर आर बाय डी टी इंटीग्रेट करने का, अगर दोनों टर्म्स में दिया तो ये यूज करने का. ओके, सो एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या क्या था? पी इंटू टी, और इफ ऑल कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर टी इफ आई इज कांस्टेंट, इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट क्या था? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, एंड दोनों कांस्टेंट है तो वी आई टी. Energy dissipated in a resistor. Energy dissipated in a resistor. .
आ गया फॉर्मूला I square RT, वेरी फेमस फॉर्मूला. करंट टर्म्स में दिया तो यूज दैट वन. एंड when we have to use this one only when current is constant. चलो क्वेश्चंस करेंगे. बोलो. फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन ए रेसिस्टर इन 2 seconds. इन 2 seconds में फर्स्ट केस में एनर्जी डिसिपेट चाहिए रेसिस्टर में, एंड सेकंड केस में एनर्जी डिसिपेट चाहिए. हियर करंट इज कांस्टेंट, हियर करंट इज वेरिंग. सो एनर्जी डिसिपेटेड फॉर्मूला क्या है? व्हेन करंट इज कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ आई में I स्क्वायर RT यूज करो एंड सॉल्व. T is 2 seconds. तो कितना है? 3 square is 9 into 2 into 2. So 36 joules. Joules of energy is getting dissipated in the resistor. Second one करो. 32. Yes, 32. Good. Second one क्या है? Since current is varying in terms of, देखो, it depends on time. So we cannot use energy into P into T. I square RT we can't use. So integral P dt use करने वाला है. Energy dissipated in resistor. Integral in terms of I में क्या है? I square R T, right? dt. Now here I के जगह में सब्स्टिट्यूट करो. कितना? 2t होल स्क्वायर इज 4t स्क्वायर. 4t स्क्वायर R T dt. सो t क्यूब हो जाएगा. सो 4 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल t क्यूब का इज t पर 4/4. R is coming outside, right? Integral t cube by 4 आएगा ना. 4 cancel. Now t power 4 means 0 to 2 seconds, right? Integration, right? Integration is 0 to 2 seconds. You can put 0 to 2 seconds because it is in 2 seconds, right? So So T cube, आएगा right? Because T square. t square, right? Yeah. I square R. Okay, sorry. We'll use the formula of this one, right? I square RT, right? Yes, sir. Okay. Sorry. Cut. Sorry. So we done this one, right? So it is t cube by 3. ना करो कितना आएगा? t cube by 3. 64/3. हाँ 64/3. अब कैंसिल करो, कुछ क्या होगा? हाँ कैंसिल करो, कितना आएगा? नो सब करो. 0 to 2 seconds, राइट? R कितना है? R is 3. So 3 कैंसिल. So 4 into t cube by 3 into 3, 0 to 2. So cancel. करो. 4 into 2 cube is 8 minus 0. So it is 32 joules. तो कह रहा है. तो आपको सिंस करंट इज वेरिंग वी आर यूज दिस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. चलो करो. I'll give answer options. डायग्राम ड्रॉ करो. We'll get. Two equal resistances when connected in series to the battery consumes electric power of 60 watts. दोनों मिलके कंज्यूम कर रहे हैं 60 watts. ओके, तो डायग्राम ड्रॉ करो. Two equal resistances R and R when connected in series. I connected a battery V. It is consuming a power P1 is 60 watts. Okay. Now, if these resistance are now connected in parallel, same resistances, now I connected in parallel. And same voltage I'm connecting. Okay. Same battery. The electric power consumed is P2 is how much?
इसमें करंट तो कांस्टेंट है, नॉर्मल बैटरी है ना, करंट इज कांस्टेंट. इसलिए हम क्या यूज करेगा, वोल्टेज इज गिवन, टोटल पावर इज दिस वन, राइट. सो वोल्टेज टर्म्स में वी कैन राइट फॉर्मूला. फर्स्ट आर इक्वल फाइंड करो इसका. आर Sir, इक्वल इज 60. कितना? 60. नो, Yeah. रॉन्ग. फर्स्ट फाइंड आर इक्वल. आर इक्वल इज 2R. एंड वी नो पावर का फॉर्मूला P is equal to V square by R equivalent. Because voltage terms में दिया ना, voltage same voltage है ना, that's why V square by R is P1. So this is V square by 2R, which is equal to 60. First equation. Okay, now इसका R equivalent find करो. R equivalent is R by 2. Now power का फॉर्मूला क्या है? V square by R equivalent. R equivalent is R by 2. So it is 2V square by R. Okay. From this, what is V square by R? तो 2 को उधर भेजो, 120. तो सब्स्टिट्यूट V स्क्वायर बाय R के जगह में V स्क्वायर बाय R इज 120. सो 2 into 120 is 240 watts power is consumed in this circuit, dissipated in the circuit. तो दोनों का ऐसा केसेस देगा, इसमें रिजल्ट वी कैन यूज फ्रॉम दैट. V square by R equivalent. So three formulas are there, right? We can use any of them, but current is not given. We are using that in terms of voltage. V square by R. 240 is answer. The resistance network shown below are connected to a DC source of 16 volts. Okay. The power consumed by the network is, total power is 4 watts consumed हो रहा है इस circuit का total power. Find the resistance R. R is how much? Same method करो. Sir, 8. Yes, correct. 8 ohms. So here first find R equivalent. R equivalent कितना है? ये 2R है, R 3R, 4R. इसको कितना है? 72 by 18. 4 4R. हाँ, Yeah. पूरा मिलके कितना है? 4R, 6R,
So now 8 hour. These are R equivalent. Now since total power consumed is 4 watts, right? We know the voltage terms may we know, right? Formula P equal to V square by R equivalent. So V square is 16 into 16 by R equivalent is 8 hour. And power is how much? They given as 4 watts. So calculate karo. 8 to the 16, 4, 4, 16. So R is equal to 8 ohms. A total network ka power dissipated is 4 watts. Okay. See how understood? Now power rating of an appliance. Olden days mein they used to have this type of bulbs. याद है ना? We studied in 10th also. Tungsten, 3380 degrees Celsius melting point बोल के we studied. Okay. Power rating they will be giving. Like 220 volts, 100 watts ka bulb rating will be given. What is the meaning of that one? What is the meaning of this one? मतलब meaning क्या है? 220 volts, 100 watts means what is the meaning? Rating क्या है? Power is watts. Power is formula क्या है? हाँ, tell me. So it's like the amount of power consumed per hour. Per hour? Like Per no. Anything? See, power का formula is what? Energy by time, right? मतलब देखो 100 watts means 100 joules per second. मतलब what is the meaning? If I connect this bulb at 220 volts only, okay, then 1 second में कितना energy dissipate हो रहा है? 100 joules of energy is getting dissipated. That is the meaning. Okay. So rating always 220 volts. अगर 110 volts में whether same power will be dissipated? 110 volts में? No. कम है. Okay. So very important. Energy is dissipated. वो लिख लो. Energy is dissipated. This much 100 joules of 100 joules per second energy is getting dissipated at 220 volts. Now a power consumed, I can tell, depends on voltage also. It depends, right? Voltage पर depend हो रहा है. Suppose normal bulb है, एक घर में लाइट में डिम में आता है तो घर में बोलते हैं ना वोल्टेज कम है, थोड़ा वोल्टेज अच्छा है तो ब्राइटनेस आएगा. So I can try it. Brightness of the bulb. Brightness of the bulb is proportional to power rating or power consumed. Power consumed is very important. Questions इसमें भी आएगा. Which will they'll give the diagram. They'll tell which will bright more. ऐसे बोलेगा. So ज्यादा power consume कर रहे हैं, more the brightness. Okay. और ज्यादा power dissipate कर रहे हैं. That is also same. So more the मतलब 200 joules of energy is getting dissipated per second means brightness is more. ऐसा. Okay. This is important. Covered? चलो. Covered, Ashram? Yeah. Now, information given by the power rating. Suppose मान लो आपको bulb is given to you 220 volts 100 watts. From that what we can find? What we can find from this? First one we can find resistance of the bulb. Resistance of the bulb we can find. Okay, resistance of the bulb we can find. How to find? Tell me, इसका resistance find करो. We know that P is equal to V square by R, right? From this, R is equal to V square by P. So V square is 220 into 220 by power is 100. So 0, 0, 0, 0. 22 and 22 is 484 ohms. Resistance of the bulb is 484 ohms. We can find resistance by using these two readings, power and voltage. Questions में कभी भी we can convert sometimes. Sometimes आपको power में difficult हो रहे तो you have to convert into resistance and solve. Okay. दो bulbs अगर series में दिया आपको difficult हो रहा है, bulb का resistance find करके दो resistance in series हो जाएगा, आपको easy हो जाएगा calculation. Series में आप formula मालूम है ना वो वाला. Okay. Next one.
Second one is maximum safe current also we can find. Maximum safe current we can find. Okay. So we know that formula. P is equal to VI. I is equal to P by V, and this is the maximum current we are trying to find. Because maximum rating we are putting, right? 100 by 220 volts. So 2 5 is 10, 2 11. So 5 by 11 amperes. So this is a maximum current bulb can withstand. अगर इससे ज्यादा करंट होगा तो ये फिलामेंट विल ब्रेक. ओके, सो कभी भी बल्ब का रेटिंग दिया तो वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस, वी कैन फाइंड सेफ मैक्सिमम सेफ करंट वी कैन फाइंड. ओके, अगर वोल्टेज कम किया देन वेदर रेजिस्टेंस विल चेंज हियर. बल्ब का रेजिस्टेंस विल चेंज. बल्ब इनिशियली 220 वोल्ट्स 100 वैट्स. मैं सपोज मैं वोल्टेज को कम कर दिया, आई विल कनेक्ट विद अ बल्ब व्हिच इज हैविंग लेस वोल्टेज, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब विल चेंज और नॉट? Yes or no? So it would depend on how you connect it. कैसे कनेक्ट करेगा? लो, हाथ से कनेक्ट करेगा बल्ब को. नॉर्मली वोल्टेज कम वोल्टेज से इफ यू कनेक्ट, रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब विल रिमेन सेम. रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज. आई टोल्ड राइट, रेजिस्टेंस का. सो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, कोई भी कंडीशन में वोल्टेज कम करो किसका, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब तो सेम है. टंगस्टन सेम मटेरियल है, सेम वाला, रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज. ओके, विदाउट V इक्वल आई आर फॉर्मूला में नॉर्मली R इज इक्वल टू V बाई आई. अगर वोल्टेज कम किया तो करंट आल्सो विल बिकम कम, रेजिस्टेंस विल सेम. ओके, चलो, now we'll do some questions based on this. So formula तो सेम है. फॉर्मूला तो पावर का जो भी फॉर्मूला सीखा है दैट ओनली. हाँ, करो ये ऑप्शंस. Electric bulb is marked at this much 100 watts 220 volts. Now if the supply voltage drop to 110 volts, what is the new power dissipated? Options में which one we can eliminate first of all? अगर वोल्टेज में 110 volts बना दिया, so power will decrease, then 100 बढ़ेगा, decrease, right? So which one we can neglect directly? Okay, we'll see. Question करो, देखते हैं. डेफिनेटली कम होगा ना, so we can neglect 100 and 200, right? Because 100 से ज्यादा नहीं होगा ना, वोल्टेज कम होगा, कम किया तो. Initially 100 watts 220 volts is bulb. नो क्या क्या सेम बल्ब को कितना 25. Yeah, 25. 100 वोल्ट्स में कितना पावर है? P dash is how much? हाँ, 25 is answer. Because from here to here, what is constant? Resistance is constant, right? So पहले resistance find करो इधर. Resistance कितना है? R is equal to V square by P, right? Now only we calculate, right? कितना? 484 ohms. Now use this resistance in this. P dash is equal to V square by R. So 110 into 110 by R. We'll get R is 484, right? So it is 25 watts. Yeah. Okay? Sure. करो next one. ये JEE में इस क्वेश्चन है, सॉल्व करो. Two electric bulbs, this much and this much, are connected in series across the 220 volts. So दोनों, एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, are connected with a series. 220 volts. इसका रेटिंग है 25 watts. This is 100 watts.
Okay. Voltage 220 volts current. Yeah. If 25 watts and 100 watts bulbs drawn power P1, P2, P1, P2. So then what is the value you're asking? Whether the answer will be 25 only or P1 is 25 only or changes? Correct. What is the meaning of this one? At 220 volts only, it will dissipate 25 watts. Mother, इधर देखो इधर 220 volts in series में it is there, right? So this voltage will not appear here and here. So definitely changes, it will change. Okay, try करो. Shivang, you will answer. How much power it will dissipate? 16 and 4. Why? You done our question? Guessing. Okay. Sadik, answer. I'll give clue. देखो power voltage bulb का. What you can find from this? Resistance we can find, right? So इसका resistance find करो. We convert this into the resistance format. R1 you find separately. And similarly second bulb का resistance find करो. R2 find करो. And connected with a battery 220 volts. Now देखो it is normal series circuit हो गया. Now from this I can find current. Now if I find current, I can use to find P1 I square R1 will get, and P2 I square R2 will get. Power dissipated in the resistor. Power will be dissipated in the resistor only, right? Bulb में. So find करो. So resistance first one, second one find करो. कितना है? R equal to V square by P use करो. R1 find करो. Similarly V square by P use करो. R2 find करो.
सो R1 कितना है? V square by P. P is 25 watts. Okay. So 1936. 1936, huh? Yeah. And R2? 484. 484 ohms. Khatam. Now this is 1936, 484 ohms. Now current कितना है? V by R equivalent. V by R equivalent. So 220 by 1936 plus 484. 1940. कैलकुलेट करो कितना है? 2420. 2420, right? और कैलकुलेट करो कितना आएगा? 211 जो 1 by 11. so 11 by 1 by 11. 1 by 11 ampere. Khatam. Now current you got. Now use I square R1, I square R2. So bulb से slowly we can convert into resistance. Since we know individual voltage, individual power. Sixteen and 4. Yeah, first one is 16 watts and second one is 4 watts. Okay. चलो. So आपको कन्वर्शन करना आने का, नहीं तो इधर ही रुक जाएगा हम लोग. 220 वोल्ट्स में पावर के लिए आपको वोल्टेज चाहिए, इधर करंट चाहिए ना. So it is difficult to find voltage because this voltage will not appear here. Series है ना, it will divide. So there is a problem. हाँ, क्या करो? The power rating of 3 bulbs individually they given. Okay, this much. If 3 bulbs are connected in series to the DC supply, which bulb will grow brightest? ज्यादा ब्राइट किसका आएगा? भाई देखकर पता चल सकता है ना कौन ज्यादा आएगा ब्राइटनेस. फुल ब्राइट कैसा आएगा? किसका आएगा सात्विक? 100 volt third bulb. 100 watts 200 volts, right? Watts. Wrong. Okay. Individually brightness will be more, but when I connected in series में वो उल्टा हो जाएगा. See, हमारा घर का वोल्टेज है, हमारा घर का कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल में इफ आई पुट द दिस वन ज्यादा वाला विल ग्लो मोर, बट सीरीज में उल्टा हो जाएगा. बट विल कैलकुलेट. हाँ करो देखते हैं. आई टोल्ड यू ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन द पावर डिसिपेटेड. तो मोर द पावर मोर द ब्राइटनेस. कैलकुलेट करो. A, B, C, all glow same. सो देखो कर रहे हैं. और tell me Satvik, what is the idea we have to follow? Tell me which one will glow more brightness. So how to do? इंडिविजुअल है तो 100 वाला ज्यादा आएगा, बट कनेक्टेड इन सीरीज में. सो विच वन इज द थिंग? सो आई टोल्ड यू पावर डिसाइड्स द ब्राइटनेस. मोर द पावर कंज्यूम मोर द ब्राइटनेस.
सिंस सीरीज है, सीरीज में व्हाट इज सेम, करंट इज सेम, सो पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज करेगा टेल में, आउट ऑफ 3 फॉर्मूलास में पावर इक्वल टू आई I स्क्वायर आर. नाउ सिंस करंट इज सेम, पावर डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस. नाउ किसका ज्यादा रेजिस्टेंस है, पावर कंज्यूम्ड इज मोर, ब्राइटनेस इज मोर. ओके, नाउ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे एक एक का. सो R1 रेजिस्टेंस कितना होगा, V स्क्वेयर बाई P. सो 220 होल स्क्वेयर बाई P. बट डोंट कैलकुलेट, पीपल स्टार्ट कैलकुलेटिंग हियर, वो प्रॉब्लम हो जाएगा. बिकॉज वोल्टेज तो आपको इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल का वोल्टेज सेम है ना. R2 इज 220 होल स्क्वेयर बाई 50. R3 is 220 होल स्क्वेयर बाई 100. नाउ टेल मी, इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस मोर है, R1. न्यूमरेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर कौन सा कितना, R1. R1. 25. Lower the resistance, more the resistance, right, more the value, right. So R1 is very high. If R1 is very high means power consumed is very high. If power consumed is very high, brightness of A is very high. That means छोटा वाला will bright more. इन सीरीज में याद रखो, that आ जाएगा. इन सीरीज में छोटा वाला will bright more. But resistance will decide the thing always. कॉम्बिनेशन दिया तो भी you do थोड़ा रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल करके we have to find. Okay, next. Sir, even in parallel we do the same, but that then was I is different, right? I is different, parallel. Yeah. करो. But which is same? Voltage. So power in terms of voltage में कौन सा है, that one. Sir, C will glow the brightest. Yes, सबसे ज्यादा C will. याद है P is equal to V square by R. Voltage is same, right? So power, voltage is same, that's why power is inverse proportional to resistance. So lesser the resistance, more the power in this parallel connection में. So सबसे ज्यादा resistance if you calculate, will get the सबसे ज्यादा किसका आएगा resistance, श्रीराम टेल में किसका resistance कम आएगा, C, that one. So that's why it will glow more. These are the electrical energy and power का बेस का क्वेश्चंस का. ओके, सो आपको क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यूज का, उसमें थोड़ा ज्यादा मॉडल करने का, बट मॉडल फार्मूलास वगैरह सेम ओनली, तो थिंकिंग पावर पे लगाने का, किस में करंट जा रहा है, किस में वोल्टेज जा रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा कम है, थोड़ा लगाने का टाइम लगेगा इसका. ओके, वी लेफ्ट विथ मीटर ब्रिज, एक कहानी है दैट वी विल सी नाउ. ओके, वन. ओके, लिखो मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज. मीटर ब्रिज लास्ट इक्विपमेंट, लास्ट वन, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज. ए मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन लैब में आल्सो दे हैव टू डू एक्चुअली दिस ऑल थिंग्स. Before they used to have potentiometer, but they deleted now. Potentiometer is not there. Only meter bridge is there. Okay. So meter bridge क्या है? We will see. इसका uses क्या है? इसका principle क्या है? We will see. Meter bridge का first use क्या है? Measures the unknown resistance.
Suppose if I given one resistance to you, there it is not written there. I will tell you to calculate इस वायर का resistance कितना है. We can calculate by using ये वाला meter bridge का. Meter bridge से we can calculate unknown resistance or compare two unknown resistances. Or compare two unknown resistance. Like R1 by R2 is how much, how many times it is more. We can compare. इसका principle क्या है? It is based on the principle of Wheatstone Bridge. We already know Wheatstone Bridge. कैसा रहेगा? पतंग शेप है ना? इसमें R into Q is equal to P into X, right? इसमें Wheatstone Bridge का वही principle है ना? Whenever opposite resistance का multiplication करने से अगर दोनों values are same, then क्या होगा? Potential at D is equal to potential at B. इसका potential will be same. Hence, no current flow in the resistance. I is 0. So we can remove this resistance. Here some resistance is there. We can remove that one easily. And we can solve by R equivalent से directly. Okay? यही principle we are using in meter bridge. यही principle we are using. How इसका construction क्या है? We will see. Copy it. इसका थोड़ा diagram आपको learn करना पड़ेगा. Construction देखो, यही diagram है. Okay. एक ये देखो, आपके पास मीटर ब्रिज में 3 कॉपर पट्टी होगा. दैट्स इट. 3 कॉपर पट्टी एल शेप में, स्ट्रेट लाइन में, एल शेप में. एंड देयर इज 1 मीटर वायर which is connected 1 copper putty to other copper putty, 1 meter wire. That's why name is given meter bridge. 1 meter का wire ले रहे हैं. Okay. 1 meter is how many centimeters? 100 centimeters. Okay. To measure, we are putting the scale on the top of the wire. Okay. 1 meter wire का. I connected copper putty से, I connected with the one cell, one key, I connected here. Okay. And जो unknown resistance, whatever you want to find, that resistance I connected here. Unknown resistance को S बोलते हैं. S we can call S. Okay. Here there is a resistance box will be there. मतलब no resistance. This is no resistance. Okay. So resistance box में क्या होगा? There is a pins will be there. I can add pins to increase the resistance. I can remove pins to decrease the resistance. But we know exactly what is the resistance we are adding, what we are removing. Okay. So this is a known resistance. This is a unknown resistance. And here there is a battery and a key and scale and a meter. Now we are trying to convert this into the Wheatstone bridge. Okay. And we want to calculate what? Unknown resistance S. Unknown resistance S spend करेंगे. देखो. मैं इधर से there is a galvanometer and there is a jockey. एक की है. jockey बोलते उसको. एक की है. एक knife edge की रहेगा. वो क्या करेगा? We can slide here and there. This key को we can slide on the wire. So when you on the switch, current will start flowing. जाएगा, इसमें जाएगा, again meet होगा, again comes here. Okay, current जा रहा है. Now क्या होगा? I will put the jockey here. I will see the galvanometer is deflecting here. When I moved somewhere here, it is coming closer. When I moved like here and there. I got one point where galvanometer is 0. I adjusted such a way that the jockey को ऐसा adjust किया that galvanometer reading is 0. Okay. Now उसका corresponding length will calculate with the scale. I call this as L. Okay. And इसका corresponding कितना होगा? Total 100 है ना? 100 minus L will be the remaining length. Okay. Now देखो, either resistance is R. This is a known resistance. Here resistance I am putting S. Right? Now I am trying to convert this length into the Y resistance. And then I will write here. And this length to Y resistance I will write here. Then balance Wheatstone bridge हो जाएगा. Because current is not flowing, right? It becomes balanced Wheatstone bridge. I can multiply this into this into this. I will get the S resistance directly. Okay. Now इसका लिखो थोड़ा. A wire of 1 meter and uniform cross section is connected across the AC circuit. Across the AC. Okay. DC only. Okay. A wire is made. A DC ले लो. Cell है ना? Okay. He is selling AC, right? Okay. चलो. No problem. Across the AC. Okay. Now a wire is made of constantin and manganese. Where we studied this one, constantin and manganese. याद है? Semiconductors. Semiconductors का नहीं है.
कौन से टॉपिक में सीखा है ये वाला? कांस्टेंट इन मैंगनीज. We studied temperature, how the resistance RF is equal to R naught into 1 plus alpha delta T, right? I told you, conductors में क्या होगा? As temperature increases, resistance will increase. But ulta semiconductors will be ulta. But alloys में, these are examples. They're not depending on temperature. Okay. So that resistance of the wire do not change with temperature during the measurement. So we are using these wires are constant and manganese majorly this wire, so that the measurement will not change. नहीं तो टेम्परेचर करंट पास हो रहा है तो टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस विल चेंज, राइट? सो वी शुड नॉट रिक्वायर्ड दैट लाइक दैट. ओके, ये डायग्राम थोड़ा सीखने का है वाला. दे फिनिश्ड मीटर ब्रिज का स्कूल में? आपको सामने नहीं हुआ? हाँ, या हो गया. ओके, इसका वर्किंग देखेंगे. ओके, मान लो आई टोल्ड यू दिस रेजिस्टेंस आर आई कनेक्टेड हियर, एस इज अननोन रेजिस्टेंस. ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस लेंथ टू रेजिस्टेंस. ओके, दे विल गिव इस वायर का रेजिस्टेंस इज आर ओम्स पर सेंटीमीटर. मान लो ये वायर का रेजिस्टेंस इज पर सेंटीमीटर में आर ओम्स आर देयर. यू टेल मी एल लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा? 1 सेंटीमीटर इज आर ओम्स. एल सेंटीमीटर इज आर एल ओम्स, राइट? आर एल ओम्स. I wrote here आर एल ओम्स. इसके जगह में I connected आर एल. I am converting this length to resistance of the wire. Okay. Now tell me 100 minus L में कितना रेजिस्टेंस होगा? 100 minus L में कितना रेजिस्टेंस? 100 minus L into R. So 100 minus L times of R. Now use the, since the galvanometer is no current is flowing, that means this is a balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge में I can write like this also. This by this is equal to this by this. Both are same, right? This into this equal this into this, or this by this equal this by this. I am equating this one. R by RL is equal to S by 100 minus L times of R. So smaller cancel. Therefore, the formula will be R by L is equal to S by 100 minus L. Khatam. From this, you know R value. You know L value with the scale we got. And you know 100 minus L with the scale we got. S we can find by this. So मीटर ब्रिज में एक ही एक फॉर्मूला है, सिंपल. आपको क्या करने का? दिस बाय दिस इज इक्वल दिस बाय दिस. व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग, लेंथ का वैल्यू ले लो. अगेन डोंट टेक आर रेजिस्टेंस, कन्वर्शन नहीं है. ओके, सो आर बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस. एंड समटाइम्स आपको अननोन रेजिस्टेंस इधर भी कनेक्ट करेगा, ये रेजिस्टेंस को इधर कनेक्ट करेगा, नो प्रॉब्लम. अगेन डोंट चेंज, इंटरचेंज दिस बाय दिस, ऐसा मत करो. If the S is connected here, R is connected here, then also if a null point is observed, this upon this S by L is equal to R by 100 minus L. So जो दिया है उसी corresponding length only we should take. Don't interchange. S से इधर है ऐसा नहीं, फॉर्मूला नहीं है ये वाला. मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग लेंथ किसका है? इसका corresponding बैलेंसिंग लेंथ ये वाला, इसका ये वाला. So वही यूज करने का. This by length is equal to this by 100 minus L. ओके, नो क्वेश्चंस करेंगे. फॉर्मूला आ गया ना? चलो करो.
ध्यान से पढ़ के अंडरस्टैंड करो, सॉल्व करो. इन ए गिवन सर्किट मीटर ब्रिज इज शोन. देखो मीटर ब्रिज लग रहा है ना आपको, ये बैलेंसिंग लेंथ है एंड दिस वन 60 सेंटीमीटर्स. दिस इज 40 मीटर, डिफरेंटली दिस इज 60, 100 minus 40 इज बैलेंस्ड स्टेट. ये बैलेंस्ड हुआ बोल रहा है. द मीटर ब्रिज वायर हैज रेजिस्टेंस 0.1 ओम पर सेंटीमीटर. कौन सा वायर का रेजिस्टेंस द गिवन. ओके, कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस x. द अननोन रेजिस्टेंस x फाइंड करो बोल रहे हैं. एंड करंट ड्रॉन, करंट आल्सो आई वांट, x also I want, current also I want. Okay, पहले x find करो. This is a balanced Wheatstone bridge, right? This upon this is equal to this by this. ऐसा. कितना ओम्स है x वैल्यू. This upon this x by 40 length only we should use is equal to 6 by 60. So 0.06 is x is equal to 4 ohms. So value you got as 4 ohms. Okay. Now try to find current in the circuit. This is a balanced Wheatstone bridge. If you find R equivalent, V by R equivalent is nothing but current. Find करो. आई फाइंड करो. उसके लिए आपको देखो रेजिस्टेंस आ गया ना. सो वन साइड इज 4 ohms, अदर साइड कितना था 6 ohms. now try to convert this into length into resistance now. The 40 into अभी कैसे कन्वर्ट करेगा. 40 centimeter is there. How to convert into resistance? Use this one. 1 centimeter is 0.1 ohm. 40 centimeter will be 4 ohms. By 10 करने का, right? Similar 60 centimeters will be 6 ohms. Colors. This is a balanced Wheatstone bridge. करो. R equivalent find करो. And tell answer. That's why they given wire resistance का formula. Conversion के लिए length को resistance में convert करने के लिए used. So 2. 2 amperes. Yes, correct. So R equivalent find करो. So these two are in series. 4 plus 6 10. AB 10. 10 and 10 are parallel. 5. R V by R equivalent is 2 amperes. I is equal to 10 by 5. So it is 2 amperes. Answer. I understood. So आपको simply Wheatstone bridge में this by this equal this by this meter bridge में, right? क्या करो. In a meter bridge, null point is found to a distance of 60 centimeters. Null point is starting wala only, always 60 centimeters में they found. Then this will be remaining length will be. Sriram कितना होगा tell me? Remaining length will be how much? 40. Very good. That means you are following good. Okay. Now if now a resistance of 5 ohms is connected in series with the resistance, second case में दिया है. ये first case है. इधर से एक equation आएगा. So what is the equation? We is trying to find RNS. Okay. What is the first equation here in this case में? R by 60 is equal to S by 40. So 0 0 cancel. 2 3 ja, 2 2 ja. So R by 3 is equal to S by 2. First equation. Now क्या बोला? If the resistance of 5 ohms is connected in series with the S. Second case में I connected one more resistance in series 5 ohms with S. At that time the balancing length what changed to कितना है 50. At that time new balancing length is 50 centimeters. If this is 50, this is also 50. Second case वाला. Now tell me, anybody?
what will be the equation now if they connected in series wala? R by 50 is equal to, इधर कितना डालेंगे? Tell me. They both are in series. R equal to is how much? S plus 5, right? So 5 plus S by 50. So cancel. The second equation. Now solve two equations and find R and S. Sir, S is 10 and R is 50. Yes. चलेंगे बोलो वही काम 2 दिन में क्यों काम में बैठ रहे भाई? वन बैटिंग कर रहे तो वन काम में बैठने का. Substitute this R के जगह में here and find S. So 5 plus S by 3 is equal to S by 2. So 10 plus 2S is equal to 3S. So S is equal to 10. Substitute S equal to 10 in this. और इसमें तो substitute तो 10 plus 5 is 15. So 10 and 15 is the answer. Okay. So इसका questions और भी करने वाला है, वो एक क्लास में हो जाएगा पूरा. So then